राम राम दोस्तों, आज मैं आपको अपने कलीग जो है विलियम से मिलाने जा रही हूँ, जो हम लोग 3 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। तो मीट मिस्टर विलियम. हाय विलियम, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल. हाउ आर यू? और he just said to you ram dosto to everybody and meet his partner. This is Glenna, my partner. Hi Glenna. How are you? Oh, she is also saying to you ram dosto. So आज ये सब हम लोगों के साथ लंच करेंगे, अपना इंडियन लंच. और आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक दिया था मुझे किसी ने यूट्यूब पे ही कमेंट किया था कि वो जानना चाह रहे हैं इंडियन जो अपना मैरिज सिस्टम है और न्यूजीलैंड में जो लिव इन रिलेशनशिप है या इनका जो मैरिज सिस्टम है उसके बारे में हम बात करेंगे. तो अब हम अंदर चलते हैं, लंच करेंगे और फिर आपसे बातें भी करेंगे. चलिए दोस्तों, अब मैं इनसे पूछती हूँ कि ये लोग कैसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैरिज सिस्टम तो है नहीं. 10% पीपल जो है वो मैरिज करते हैं, बाकी लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं और इनके बच्चे भी हो जाते हैं और उनके बच्चे जो है वो मैरिज भी अटेंड करते हैं. चलिए फिर मैं विलियम से पूछती हूँ सबसे पहले. विलियम, could you please let me know about your relationship, because you people don't do marriage before going in relationship or like that, without going engagement and like that. So I guess New Zealand in that sense is a lot like relaxed, but there are still like traditional facets within New Zealand where people will get into like a marriage before getting into a relationship. Basically, Glenna and I have been together for... The people over there, so they would like to know. Yeah, Glenna and I have been in a relationship for 3 and a bit years, and we're not married yet. Or engaged. Or engaged, yeah. So means I would like to know why you people don't want to go for without engagement. I guess there isn't really any practical need to. Right. In the sense that like there's no benefit for doing it. If that makes sense. Okay, so you mean to say you don't trust each other? It means, or not like that? No, it's not like that. It's like there's no benefit to being married. Like there's like I mean we're in no better position for being married than we are now. It's just you just do it essentially when you're ready to do it. Right, because you know very well we are in arranged marriage, and you know very well my hubby and our family relationship. Yeah, that's it. And you know about that in India. I think 80% people do arranged marriage, or maybe at the moment maybe it can be 70 or 60%. But even 10% people, I think they go for live-in relationship at the moment. Now things are going to change. Arranged marriage isn't a thing in New Zealand. People date to get to know someone, I think, before they marry them. And there's a lot longer period here where people date and get to know each other to decide if that is the person they want to marry. So I've had 3 quite long relationships, and obviously 2 of them haven't worked out. So if I'd like one person I was with for 4 years, so if I'd married them, that would have been a very big mistake, and I wouldn't be very happy right now. So I went through that experience of dating that person and realised that wasn't what I wanted from my life or from a partner. So that was an experience I went through to realise what I did want out of a partner in a relationship. So you mean to say, just like suppose you are now at the moment with William. So it's a try before you buy situation. ओके, सो दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये जो है अपना प्रोडक्ट बाय करने से पहले अच्छे से इनका अपना ट्रायल होता है इनका, एक तरह से कि रादर देन वो जो है ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, जैसे हम इंडियन पीपल ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर और खींचते रहते हैं उस चीज़ को. ये कहते हैं कि जैसे गलीना ने भी बताया हमें कि ये डेटिंग करते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चल सकते हैं कि नहीं. तो उस पर्पज़ से तब उन्हें लगता है कि अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, फिर भी कैरी ऑन करते रहते हैं लॉन्ग टर्म उसी रिलेशनशिप में. और आई थिंक यू डू किड्स ऑल्सो बिफोर मैरिज, एंड दैट्स सो इनके बच्चे भी हो जाते हैं बिफोर मैरिज. ये बहुत कॉमन चीज़ है न्यूजीलैंड में. एंड व्हेन यू डिसाइड यू शुड डू मैरिज नाउ? When you feel like it, really. To be honest, there's no structure behind it. Like, right. You know, you just kind of like, okay, maybe it's time. Like, I have friends who've got married after a month. I got friends who've been married after a year. But then these people like Jaden who've got coworker, has got 3 kids, or 3rd kid on the way, and he's not married. So
it just works for different people. And I think a little bit is also, can you afford to get married and what type of wedding you would like? For us, we'd prefer to buy a house of our own and put our money towards that than putting money towards a wedding. So for us, that is more important. Yeah. And a wedding is quite expensive, so it's whether that is a priority for you. Is it expensive in New Zealand marriage? Because Yeah. I think I mean, marriages, well, with the wedding celebration Right. costs, I think on average, over 10,000. $10,000. Over 10,000. Over $10,000. Yeah, on average, yeah. Oh, okay. So, How do you do that? Means you have to, both of you have to arrange that money and then yeah. you So, have but I'd rather spend the money on a house now yeah. than invest it in a wedding. तो जैसे अभी गलीना ने बताया कि ये जो है पहले प्रीफर करते हैं कि अपने इंडिया की तरह नहीं है कि अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी है और बाप दादा ने ही जो है मैरिज का जो एक्सपेंस है वो बियर करना होता है। ये लोग अपने एक्सपेंस खुद बियर करते हैं। अपने पहले ये अपना हाउस को बाय करना चाहेंगे बिफोर मैरिज। और अभी जैसे विलियम ने बताया कि हमारे एक कलीग है जेडन, उसके 3 बच्चे भी हैं और अभी उसने अभी तक मैरिज नहीं किया है। तो ये बहुत कॉमन है क्योंकि न्यूजीलैंड में आई थिंक यू पीपल यूजुअली डू इंडिपेंडेंट इन योर एज ऑफ 16 और व्हेन डू यू स्टार्ट योर वर्क और लाइक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल? 18, 19 most of the time. Most of the time 18, 19. Yeah. You can start a job from 15, but 15 plus. that doesn't mean you're independent. I'd say probably 18 is when you start moving out of home. And when do you prefer to go and live in relationship? Just like suppose I just talked to about both of you. Yeah. So in what age you use means the very common age over here in New Zealand. I think it's less about what age you are, and it's more about if you have someone you want to be in a relationship with and live with. Like Ben and I met maybe 3 years ago now, but we moved in together probably 2 months after we started dating. Whereas some people will be in a relationship for best part of a year and not live together. Okay, so means ये लोग बताते हैं कि 15 plus में means you mean to say 15 plus you just do your part time kind of job, Yeah. right? Paper round. Yeah, so that time you can't say you will be independent. No. But after 18 plus, so definitely over here most of the people they are independent, is it? So 18 यहाँ पे 15 प्लस बच्चे जो है वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं आफ्टर स्कूलिंग एंड वो इंडिपेंडेंट तो आप उनको उस समय नहीं कह सकते हो बट दे गो यूजुअली पीपल गॉट ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर 15 प्लस। Yeah, but you can't drive by yourself until you're about 17ish. सो ये अपना ड्राइविंग लाइसेंस इनको मिल जाता है और ये अपना पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर लेता है। इन बिटवीन अगर इनको कोई भी अपना पार्टनर या डेटिंग के थ्रू अगर इनको लगता है कि चले जाना चाहिए या एज ए फ्रेंड्स जो है ये कैरी ऑन करते रहते हैं, बट 18 प्लस ये यहाँ के बच्चे सभी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ भी इस बारे में कुछ पूछना है तो आई थिंक विलियम वुड बी एबल टू अगेन कम्युनिकेट रिगार्डिंग दिस इफ some people do have some questions regarding this, if they comment below Yeah, our video yeah, and they would like to know more. Yeah, 100%. Of course, more happy to provide more information. Yes. So they would also would like to tell us about more. If you do have some questions, just comment below on the video. And my husband already, I think he is ready to serve now. So अब हम आपको जो है अपने इन दोस्तों को इंडियन जो है लंच कराएंगे। जैसे Alright दोस्तों, so cheers गलीना एंड विलियम। सो दोस्तों यहाँ पे जो है वीकेंड्स पे जो है बियर बहुत कॉमन है। अब विलियम बताएंगे आपको कि how people you usually do over here on weekends. Well, so it's like Kiwis quite like enjoying a beer to relax on the weekends. Yeah, it's like a big part of like your socializing, catching up with friends, and having a cold frothy. So every weekend it's very common. I would say every weekend, but it's simply commonplace. Yeah. Yeah, and you people usually, I think I know about usually buy the whole crate. That's a once a year festival. It's called Crate Day, and you buy a crate of beer and drink it in the afternoon. Would you like to say something about that, Glenna? Or I don't drink very often, so it's more of a okay. guy She's not a huge drinker. thing. Yeah, I'll have a drink if we're going out, but I wouldn't drink like every weekend or with dinner or
for me. Yeah, I think Hayden just said to me he usually take everyday wine. Do you know about that, or you don't know? That's stress. Some people do have a glass of wine most evenings Yeah, to wind down and yeah, he take told it me off. about that. Yeah. So my boss Hayden, we are talking about our boss. So he usually take I think everyday wine, a glass of wine with his dinner. So we are just talking about him. तो अब दूसरी चीज़ यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर हम बॉसेस के हम बॉस को बॉस नहीं बोलते, नाम लेते हैं न्यूजीलैंड में. इट्स वेरी कॉमन. जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि आई जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट. यू रिमेंबर आई डोंट लाइक टू से मीन्स जस्ट लाइक हिडन, आई वुड लाइक टू से बॉस लाइक बिकॉज ही इज द बिग बॉस. सो या सो यहाँ पे पता है आप लोगों को मैं बताती हूँ कि ये लोग अपने बॉसेस का नाम नहीं लेते, जस्ट नाम लेते हैं. मीन्स हेडन हमारा जो है एट द मोमेंट उसने हमारी कंपनी भी बाय कर ली, तो ओनर भी है वो हमारी कंपनी का. और हम जो है सामने भी हाय हेडन, हाउ आर यू हेडन, लाइक वी यूजुअली टॉक लाइक दैट. सो आई वुड लाइक टू कुड यू से समथिंग अबाउट दिस कंटेंट आल्सो? Yeah, are you referring to essentially like the less honorific description when you approach to dealing with your employer? Mm-hmm. Yeah, well, I guess in New Zealand we're a bit more relaxed around that lot of stuff. And then like my current boss, him and I are good friends. We definitely don't have that kind of formal relationship in a sense. Whereas Anita, refers to her employer as boss man instead of Hayden or whoever. या तो मैं जैसे विलियम ने बताया कि ये जो है फ्रेंडली अपना एनवायरनमेंट यहाँ न्यूजीलैंड में वर्क प्लेस पे पसंद करते हैं. तो रादर देन ये बॉस कहे या ये लोग अपने बॉसेस का नाम लेते हैं. और मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड की कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है और उनके ओनर भी हमारे घर ऐसे आ गए थे जैसे अभी विलियम और गलीना है, वो अपने पार्टनर के साथ हमारे यहाँ लंच किया था उन्होंने. और बहुत बड़ी कंपनी है वो न्यूजीलैंड की जहाँ मेरे हस्बैंड काम करते हैं. और उनको भी हम जैसे बाय नेम ही जो है उनको बुला रहे थे, कोई सर नहीं कोई मैम नहीं. तो अब आज मेरे हस्बैंड ने इनके लिए पकोड़े बनाए हैं प्याज के और इसके आलू और इमली की चटनी. थ्रू कैन यू प्लीज सो दैट इमली की चटनी. तो इमली की चटनी और इसकी ये जो है इन्होंने आज चाट पापड़ी की लेयर्स दिखाओ ध्रुव. ये चाट पापड़ी बनाया है. हेल्प योरसेल्फ प्लीज. चलिए अभी तो हमारा ये स्टार्टर है, फिर बीच में बात करते करते मिलते हैं. ऑलराइट दोस्तों, तो अब ये हमारी वीडियो पार्ट 1 ही कह सकते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी विलियम से बातचीत करते करते. और विलियम अभी हमारे साथ लंच करेंगे तो हम उसको वीडियो मीटिंग विद विलियम पार्ट 2 वीडियो में उसको अपलोड करेंगे लंच करने के बाद. तो आप मेरे साथ अनदर वीडियो पे बने रहिए. और अब हम सब आपको राम राम कह देते हैं. बट व्हाट डू यू से? राम राम दोस्तों. राम राम दोस्तों, एंड वी विल सी यू अगेन.